अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ग्रेट डिप्रेशन। इसके बारे में हमने पढ़ा था, वहाँ पे जो प्रीवियस टॉपिक था उसमें हमने इंटर वॉर इकॉनमी पढ़ी थी, जिसमें हमने वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, इकोनॉमिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इफ़ेक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन एग्रीकल्चर पढ़ा था। आज हम ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे दैट द ग्रेट डिप्रेशन इट बिगैन अराउंड 1929 एंड इट लास्टेड द till the mid 1930. So during this period most of the countries of the world they experienced catastrophic declines in the production, employment, income and trade. तो इस पीरियड में ग्रेट डिप्रेशन में बहुत सारी कंट्रीज़, बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ममालिक जिन्होंने एक टेरिबल डिज़ास्टर, कैटास्ट्रॉफिक मीन्स टेरिबल डिज़ास्टर, डिक्लाइंस देखे इन द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, ट्रेड। तो इसकी जो एग्जैक्ट टाइमिंग या इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन जो है ये कंट्री टू कंट्री वेरी होता है। देखिए, इसके बारे में हमने बात की थी प्रीवियस टॉपिक में। इस पीरियड में एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ दे वर worst affected and the fall of the agricultural price was more than that the industrial products. The First World War that gave a boost to the agriculture and industry of the USA, but after the war there was abundant supply in the market and it pushed down the prices of industrial goods and agricultural products. अब यहाँ पे हम देखेंगे factors responsible for depression. A combination of several factors were responsible for the depression. First, agricultural overproduction remained a problem. ठीक है, this decreased the prices of agricultural products. Farmers tried to expand production to maintain their overall income. This worsened the situation, pushed down the prices of agricultural products even further. Second, at that time many countries financed their investment through the loans they got from the USA. American capitalists stopped all loans to European countries. The countries which were dependent on the US loans now faced an acute crisis in Europe. It led to the failure of some major banks and collapse of currencies like sterling. यहाँ पे हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, combination of several factors that led to these were the factors responsible for the depression. First was agricultural overproduction remained a problem that decreased the prices of agricultural products. Second, at that time many countries financed their investment through the loans they got from the USA. क्या था second? Many countries financed their investment through the loans they got from USA. और अमेरिकन कैपिटलिस्ट्स दे स्टॉप्ड लोन्स टू यूरोपियन कंट्रीज। उससे क्या हुआ, जो कंट्रीज यूएस लोन्स पर डिपेंडेंट थी, दोज कंट्रीज विच वर डिपेंडेंट ऑन यूएस लोन्स, नाउ दे फेस्ड प्रॉब्लम इन यूरोप। अगर हम यूरोप की बात करेंगे, वहाँ पे failure of major banks and collapse of currencies like sterling. And US, United States, most affected country by depression. So we can say it was the most affected country by depression. US was the industrial country most affected by the depression, as the banks had cut domestic lending and called back loans. Farmers could not sell their harvests. Households were ruined and the business collapsed. The consumerist prosperity of the 1920s disappeared and the unemployment increased.
ये यूएसए की बात थी, वहाँ पे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अराइज हुई. Ultimately, US banking system collapsed because the banks were unable to recover investment, collect loans and repay depositors. तो इसमें बहुत सारे बैंक्स भी क्लोज हुए. By 1933, 4,000 banks were closed. Between 1929 and 1932, uh, about companies, 11,000 companies, 1,10,000 companies. It is not 11,000 here. It is, यहाँ पे आप देख लीजिए, 1,10,000 कंपनीज दे हैड कोलैप्स्ड. तो यूएसए में ज़्यादा इस डिप्रेशन का, जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था, ग्रेट डिप्रेशन था, इसका ज़्यादा इफेक्ट रहा. तो यूएस attempted to protect its economy in the depression by doubling the import duties which hit the world trade badly. यहाँ पे हमने ग्रेट डिप्रेशन, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन एंड यूएस मोस्ट इफेक्टेड कंट्री बाय डिप्रेशन के बारे में देखा. तो आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, इंडिया का क्या इफेक्ट रहा. इंडिया जो ग्रेट डिप्रेशन था, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द इंडिया. दैट वाज अबाउट द टुडेज टॉपिक. थैंक यू वेरी मच.